Good morning. Can you hear me? Yes, sir. So last time I had given you a broad topic that was stability, stabilizability, controllability and observability. वो टॉपिक हम डिटेल में स्टडी करेंगे. Stability we have already discussed a bit when we were talking about conversion of state space models into transfer function models. We could see a correspondence between the degree of between the denominator polynomial of transfer function and the this characteristic equation of matrix A in state space models. So if I just try to refresh your memory, so you have got a model x dot equal to ax plus bu and y is equal to cx plus du. इसको हमने ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में कन्वर्ट किया था. So what was the transfer function model like? It was ys is equal to yes or gs is equal to c si minus a inverse of b plus d, isn't it? So this we had written as c. So this was actually adjoint of si minus a upon determinant of si minus a into b plus d. This is like this, which we had written as c adjoint of si minus a into b plus d determinant of si minus a upon determinant of si minus a. So we had seen that this adjoint, this is a matrix and its order is n cross n. It's actually a matrix polynomial wherein each term is a polynomial of degree at the most equal to n minus 1. Is that okay? Yes, sir. This is actually 1 cross n for a single input, single output system. And this is n cross 1 for a single input, single output system. So when you perform this operation, you actually end up with a polynomial of degree at the most equal to n minus 1. Isn't it? And what is this? If d is non-zero, then for single input, single output systems, it will be a scalar. That means its size will be 1 cross 1. And this will be a polynomial. This is going to be a polynomial of degree n. So when you add up a polynomial of degree, polynomial with degree at the most equal to n minus 1, with a polynomial of degree n. So what will be the numerator polynomial like? Yes, roll number 3. Are you online? Yes, sir. हाँ बताओ मुझे इसका जो न्यूमरेटर होगा what will it be like? सर ये पहले का भी होगा सर, n-1 का भी होगा और n वाले का भी होगा सर, दोनों को मिला के सर. क्या होगा दोनों का? सर दोनों को मिला के सर, n-1 का भी और n का भी सर. नहीं मैं कह रहा हूँ जब इन दो को ऐड करेंगे we'll get another polynomial and the degree of that polynomial will be what? Sir degree n sir, of degree n sir. Okay,
So it will be a polynomial of degree n, sir. n. And if d is equal to 0, in that particular case, this numerator will have a polynomial of degree at the most equal to n minus 1. Isn't it? Yes, sir. If d is equal to 0, the numerator polynomial will have degree at the most equal to n minus 1. Isn't it? Yes, So sir. in the numerator, you get a polynomial which we can call as, let's say, PS. It's the numerator polynomial. It's having degree n in case d is non-zero, and in case d is 0, it is having degree n minus 1, or at the most equal to n minus 1. But in no case will it have a degree greater than n, isn't it? Yes, sir. So these rational functions with numerator polynomial having degree greater than the denominator polynomial, they are not physically realizable. They are not realizable as physical systems. Let's first of all talk about the denominator polynomial. This denominator determinant of si minus a, it will be a polynomial of degree n. So we'll call it QS, isn't it? And this, as you know, this is the transfer function of the system. Transfer function, by definition, it's, you know, that it's a ratio of two polynomials in S, isn't it? With the where the denominator polynomial cannot be equal to 0. And one more thing that we take while defining the transfer function is that the common factors in the numerator and the denominator are cancelled out. When we define the transfer function is basically defined in minimal form. Minimal form means we actually cancel out whatever common factors we have in the denominator and in the numerator and the denominator. Like if you have a transfer function like this, your numerator polynomial you have obtained, it's something like, let's say, s squared plus s. And denominator polynomial, you have obtained something like s squared plus 2s plus 1. Okay. So you can write this numerator as s into s plus 1. And denominator can be written as s plus 1 whole square. So a factor in the numerator and the denominator cancels out. It's like this. So you get the transfer function as s upon s plus 1. Isn't it? Yes, sir. Now, this is the transfer function. And from transfer function theory, you know that the denominator polynomial of the transfer function, what's that known as? What is the denominator polynomial of transfer function known as? Characteristic equation. Characteristic polynomial, isn't it? Is known as characteristic polynomial. And what are the roots? And so this QS is the characteristic polynomial, which is like QS is the QS. This denominator polynomial is we have obtained this denominator, this representation after fulfilling the condition of transfer function that maybe some factors in the numerator and denominator are cancelled out. After that, we have represented it as PS upon QS. So PS is basically the characteristic polynomial. And QS is equal to 0. What's this known as? What is this equation known as? Characteristic equation. And what are the roots of characteristic equation known as? Poles. Roots of characteristic equation are known as the poles of the transfer function.
Okay. Roots of the characteristic equation are known as the poles of the transfer function. And as you know, poles define the stability of transfer function models or of systems whose transfer functions are given. So how do poles define the transfer function stability? You know that for a system to be stable, ये मैंने last time भी लिखा था, the poles of its transfer function must lie exclusively in the left half of the S plane. ये हमने थोड़ा सा last time discuss भी किया. For a system to be stable, the poles of its transfer function lie exclusively in the left half of the S plane. In case there are no cancellations or there are no common factors in the numerator polynomial and denominator polynomial. In that case, your QS will be simply determinant of Si minus A, isn't it? In case there are no common factors in the numerator polynomial and the denominator polynomial, in that case, what will you have? QS or the denominator, this QS will be equal to determinant of Si minus A, isn't it? Yes, sir. You can see here, I told you that this representation I have obtained finally after cancelling out the common factors, even if there are any common factors. In case there are no common factors between the numerator polynomial and the denominator polynomial, this will simply be PS and this will simply be QS, isn't it? So QS will be determinant of Si minus A. And what does this determinant of Si minus A term remind you of? It's actually the characteristic polynomial of matrix A. For any square matrix A, you already know characteristic polynomial is defined as characteristic polynomial we write as determinant of lambda I minus A, isn't it? Yes, sir. This is same with the only difference that instead of lambda we are representing it as S, isn't it? So in case you have no cancellations in the numerator polynomial and the denominator polynomial, what will you have? You will have QS, which is actually in that case determinant of Si minus A, and which is same as the characteristic polynomial of matrix A. For a matrix A, this is the characteristic polynomial. What is the characteristic equation? Determinant of lambda I minus A equal to 0, isn't it? Yes, sir. And what are the roots of characteristic equation of a matrix known as? Eigenvalues. Eigenvalue. So that means for a system in which there are no pole zero cancellations, there are no cancellations in the numerator polynomial and the denominator polynomial, the characteristic polynomial of transfer function, this is actually the characteristic polynomial of transfer function in that case. Characteristic polynomial of transfer function is the same as the characteristic polynomial of matrix A, isn't it?
That actually means the characteristic equation of the transfer function is same as the characteristic equation of matrix A, which in turn tells you, because the roots of characteristic equation of a transfer function are known as poles, and roots of characteristic equation of a matrix A are known as eigenvalues. That means in case there are no pole zero cancellations, there are no cancellations in the numerator polynomial and the denominator polynomial, your eigenvalues and poles carry the same information. The set of eigenvalues is same as the set of poles of the transfer function. Are you getting me? Yes, sir. So that means in case, so this implies that in case there are no cancellations in the numerator polynomial and the denominator polynomial, the characteristic equation of the transfer function GS is same as the characteristic equation of matrix A. Is that clear? Which actually implies that in this case, wherein there are no pole zero cancellations, which implies that in this case, the set of poles of the transfer function is same as the set of eigenvalues of matrix A. Is that clear? And since you know that, since poles carry information about the stability of the system, so that means same information is also contained in the eigenvalues, because you know that the set of poles of transfer function is same as the set of the eigenvalues of the matrix A. So this actually implies that when we talked about stability of transfer functions, we said that the poles must lie in the left half of the S-plane. So when we talk about stability of state space models, the same information can be conveyed in a different form, like for a system defined by the state space model, which we have already written in the beginning. For that system to be stable, its eigenvalues must lie exclusively in the left half of the S-plane. Is that clear? So this actually implies for a system to be stable, its eigenvalues, or the eigenvalues of matrix A, which are actually known as the eigenvalues of the system, its eigenvalues must lie exclusively in the left half of the S-plane. Is that clear? Is that clear to all? Yes, sir. तो मीन्स अगर आपको एक स्टेट स्पेस मॉडल दिया गया है और आपको उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो आप आइगन वैल्यूज उसके ऑब्टेन करो मैट्रिक्स ए के और उनकी लोकेशन देखो इस प्लेन में, and if you find that because eigenvalues basically, because you will get complex numbers, there will be it's a complex what you call solution, it will have the solution will be complex numbers, so you'll have to see the location in the S plane, and if they are exclusively in the left half of the S plane, you can say that the system is stable. The reasoning is the same as we followed, as we talked about last time. What does left half of the S plane में क्यों stable होता है सिस्टम अगर eigenvalues left half में हो या poles left half में होगी, वो मैंने last time आपके साथ डिस्कस किया था. उसके response में you will have negative exponential terms which will actually decay to zero as time approaches infinity. So this is one case. अभी तक तो कोई contradiction है ही नहीं. अगर आप so we have considered a case wherein the numerator polynomial and the denominator polynomial have no common factors.
Now let's consider a case wherein there are some common factors in the numerator polynomial and the denominator polynomial. So if there are some, consider a case wherein there are common factors between the numerator polynomial and the denominator polynomial. उस केस में क्या होगा, आपका जो QS है, जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है ट्रांसफर फंक्शन का, it will not be actually equal to determinant of Si minus A, isn't it? ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है, आपने देखा कि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, हम वो वाला केस कंसीडर कर रहे हैं जिसमें कि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में कॉमन फैक्टर्स हैं। तो जो वो कॉमन फैक्टर्स हैं, जब आप उसका ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करोगे तो ये कैंसिल आउट दैट कॉमन फैक्टर, isn't it? Yes, sir. So your QS will actually not exactly be equal to determinant of Si minus A. It will be some factor of this, जिसमें से कि वो वाला कॉमन फैक्टर इसके साथ कैंसिल आउट हुआ है। लाइक इन दिस केस जो मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पर, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, आपने इसमें से कॉमन फैक्टर देखा, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो आपका नाउ योर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इज नॉट सेम एज दिस डिटरमिनेंट। ये इसका जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल था इस फंक्शन का, इसमें से एक फैक्टर कैंसिल आउट होकर ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल बना हुआ, isn't it? Is that clear? Yes, sir. तो इस सिस्टम में जो नंबर ऑफ पोल्स होंगे वो कितने होंगे फिर? What will be the number of poles in the system? डिटरमिनेंट ऑफ Si minus A की डिग्री क्या है? अगर A जो है, अगर ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो इसकी डिग्री, ये वाले पॉलिनोमियल की डिग्री n है, isn't it? जी सर। और QS अगर कॉमन फैक्टर्स पूछे, अगर मान लो एक कॉमन फैक्टर है जो कैंसिल आउट हुआ, तो इसकी डिग्री क्या होगी? n minus 1. N minus 1. So in general, if there are p common factors between the numerator polynomial and the denominator polynomial, so इसकी डिग्री आएगी n minus p, isn't it? Where p is the number of p is the number of common factors. It's not the number of poles. p हमने लिया number of common factors. Is that clear? जैसे अभी मैंने बोला, अगर एक फैक्टर कैंसिल आउट हुआ तो आपने बोला कि इसकी डिग्री n minus 1 आएगी, और अगर कॉमन फैक्टर्स न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल में p है, नंबर उनका p है, तो इसकी डिग्री क्या आएगी? n minus p. And what will be the number of poles? Number of poles will be number of poles of the transfer function will be yes, rule number 3. Yes, sir. What will be the number of poles of the transfer function? Sir, n minus 1, sir. n minus 1, sir. n minus 1 कैसे? 1 कहां से आ गया? Sir, p, sir, p, n minus p, sir, वही ना सर, p कॉमन फैक्टर, n minus कॉमन फैक्टर वाला, n minus कॉमन फैक्टर, उतने नंबर ऑफ पोल्स होंगे ना इसमें। जी सर। और जो डिटरमिनेंट ऑफ Si minus A है, ये तो still it is still the characteristic polynomial of degree A. Cutting the numerator and the denominator polynomial doesn't affect that. So this actually determinant of Si minus A is the characteristic polynomial of matrix A, isn't it?
So when you solve the characteristic equation of matrix A, what will be the number of eigenvalues? What will be the number of eigenvalues? N. N. Very good. So number of eigenvalues will be N. So that means where N is greater than N minus P. So that means the set of eigenvalues of the matrix A will be a superset of the set of poles of the transfer function of the system, isn't it? जी सर. ये सारे पोल्स इस आइगन वैल्यूज के सेट में होंगे क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट कर दिए. हमने पहले न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया. फैक्टराइज करने के बाद हमने कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट कर लिए. कॉमन फैक्टर्स जो कैंसिल आउट हुए वो आइगन वैल्यूज के सेट में तो दिखेंगे लेकिन पोल्स के सेट में नहीं दिखेंगे. आर यू फॉलोइंग मी? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. Is that clear? Yes sir. When you cancel out the common factors in the numerator polynomial and the denominator polynomial, so now your number of poles of the transfer function will be less than n. It will be actually equal to n minus number of common factors which have cancelled out. But that will not change the number of eigenvalues of the system. Number of eigenvalues will still remain equal to n. And the set of poles of the transfer function actually will be a subset of the set of eigenvalues of the transfer function. That means all the poles of the transfer function will also be the eigenvalues, but all the eigenvalues will not be the poles. There will be some additional entries in the set of eigenvalues. Do you get me? Is that clear? So this actually implies the set of poles of the transfer function GS हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे the set of eigenvalues of a state space model is a superset of the set of poles of the corresponding transfer function. Of the corresponding transfer function. Is that clear? Is that clear? जी सर. Okay. So this is something that you should always remember and that you should you should understand properly. Now इसमें अब कॉन्ट्रडिक्शन आ गई. स्टेबिलिटी का अभी तक तो सही चल रहा था. हमने देखा था कि पोल्स और आइगन वैल्यूज सेम होते हैं. तो उस केस में तो पोल्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो आइगन वैल्यूज में भी इन्फॉर्मेशन वही है. तो चाहे हम पोल सिस्टम के निकालें या आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स ए के निकालें, सो वी कैन गेट द सेम इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टेबिलिटी. But now we are talking about something different. We are saying that there may be some additional entries in the set of eigenvalues, and those entries will not be in the set of poles. So how do we reconcile this contradiction? How do we actually solve this dichotomy? So इसमें क्या how do we explain this? Like an example, अगर आपके मान लीजिए pole zero cancellations हुई और आपका जो set of eigenvalues है किसी सिस्टम के eigenvalues are let's say -1, -2 and -3, and poles are -2 and -3. This actually implies that one of the eigenvalues, that's one of the entries -1 that has got cancelled out in the numerator and the denominator polynomial. जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली थी GS की, मैंने कुछ ऐसा लिया था S into S plus 1 upon S square plus 2S plus 1. That is S into S plus 1 upon S plus 1 whole square. It's like this, S upon S plus 1. तो इसका अगर आप पोल देखो, the pole is located at -1. और इसके अगर आप eigenvalues obtain करोगे, they will actually be the roots of this, which will be -1 and -1. Isn't it? So this is -3. Sorry.
Is that okay? So इस केस में भी मान लीजिए अगर आपको सिस्टम की स्टेबिलिटी देखनी है तो ये वाला भी आपको इंफॉर्मेशन दे देगा कि सिस्टम स्टेबल है। एंड इंसिडेंटली जो इसमें कैंसिल आउट पोल हुआ वो भी स्टेबल ही है, नेगेटिव हाफ ऑफ द एस प्लेन में है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी के नोशन पे विजिबली लग रहा है कि फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें कि आइगन वैल्यूज हैं 1 -2 and -3 and poles are -2 and -3. So this tells you that the system is stable. But as far as this is concerned, one of the eigenvalues is in the right half of the S plane. This is for a same system. When you try to obtain its transfer function and somebody asks you whether the system is stable or not, you say that the system is stable. Now you try to get the same information through eigenvalues. You get this as eigenvalues. And what you find here is one of the eigenvalues is located in the right half of the S plane. You say that the system is unstable. Now, this is a serious problem. How can a system be stable and unstable at the same time? A system may either be stable or unstable because stability is a system property. It doesn't depend upon the way you are actually representing the system. State space modeling एक approach है system को represent करने का, transfer function model एक approach है system को represent करने का. तो चाहे आप किसी भी representation से system को define करो, it should not affect its basic characteristic properties. Stability is a characterizing property of a system. So it cannot be that through one modeling scheme you are saying that the system is stable and through another modeling scheme you are saying that the system is unstable. A system may either be stable or unstable. So we have to explain this contradiction. Are you getting me? Do you understand the problem? Yes, sir. So we have to explain this contradiction. And explaining this contradiction will lead us to other topics that we have to discuss in this broader topic that we had discussed last time. So this brings us to two notions of stability. So there are two notions of stability basically. One is what you call bounded input, bounded output stability. And second is what we call impulse response stability. Impulse response stability, or we also call it asymptotic stability. Bounded input, bounded output stability, which is also known as BIBO stability, it refers to the stability of input-output pair. जो आपने ट्रांसफर फंक्शन मॉडलिंग में ऑलरेडी पढ़ा होगा, that means you have a system, you want to check its stability. So as per this bounded input, bounded output stability criterion, you actually define the stability like this. For a system to be stable, for any bounded input, the output should also be bounded. What is the bounded input? So what is this? What is bounded output stability criteria? It says that for a system to be stable, every bounded input should give a, or must give a, bounded output. What do you mean by bounded input? Yes. Bounded input is one whose
amplitude is bounded. Like, can you give me some example of a bounded input? हाँ जी, दोगे क्या सब लोग? No, sir. Tell me what is the bounded input. Give me some example of a bounded input. A sin omega t. Step input is a bounded input, है ना? आपका जो साइन इनपुट है वो बाउंडेड है because its amplitude is bounded. These are all, both of them are bounded inputs, sinusoidal input, step input. And can you name some unbounded input? So ramp signal. Ramp input, it's an unbounded input because its amplitude goes on increasing, isn't it? Parabolic input, it's an unbounded input. So ramp input, parabolic input, they are all unbounded inputs. So bounded input, bounded output stability criteria states that for a system to be stable, every bounded input must give a bounded output. Can you tell me the reason for this? You know that when you actually you have a dynamical system and you are assessing its stability, किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी देखने के लिए जरूरी है कि उसकी डायनामिक्स एक्साइट करनी पड़ती है पहले. You have to excite the dynamics of the system. And how do you excite the dynamics of the system? You apply an input to it. तो हम सिस्टम को इनपुट अप्लाई कर रहे हैं. तो जब भी हम किसी डायनामिकल सिस्टम को इनपुट अप्लाई करेंगे तो टाइम रेस्पॉन्स जब हम इसका स्टडी करेंगे, its time response will have two components. We have talked about it last time also. What will be the two components of the time response? Transient and steady state. Transient and steady state response, isn't it? And if the system is stable, we have seen that the transient response dies down after some time, and what remains is the steady state response, which actually depends upon the type of forcing function, type of input that you have applied to the system. तो मान लीजिए सिस्टम स्टेबल है और आपने सिस्टम को स्टेप इनपुट, मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है और आपने उसको स्टेप इनपुट अप्लाई किया. अगर ये सिस्टम स्टेबल होता तो उस केस में इसके ट्रांजिएंट्स थोड़ी देर के बाद डाई डाउन हो जाते हैं और सिस्टम फिर स्टेप को फॉलो करता स्टडी स्टेट में. बट इफ द सिस्टम इज अनस्टेबल, व्हाट विल हैपन? If the system is unstable, even if you provide a bounded input to it, its transients are going to increase in time, isn't it? If a system is unstable, when you provide an input to it, let's say that the input is bounded, so you provide an input to it and you found that the output is unbounded. So that output का unbounded होना, that can be due to the only reason that the system is unstable. But if the input is unbounded, मान लीजिए आपने एक रैंप इनपुट सिस्टम को अप्लाई किया, रैंप इनपुट आपने सिस्टम को अप्लाई किया और आप इसका रिस्पांस देख रहे हो स्टेडी स्टेट में. स्टेडी स्टेट में आपने एक सिस्टम को रैंप इनपुट अप्लाई किया, आप स्टेडी स्टेट में इसका रिस्पांस देख रहे हैं, यू आर फाइंडिंग दैट इट्स समथिंग, द रिस्पांस इज समथिंग लाइक दिस. पहले तो ट्रांजिएंट्स होंगे, फिर हमने स्टेडी स्टेट में देखा कि इसका रिस्पांस कुछ ऐसा आ रहा है. So output is also unbounded, isn't it? Yes, sir. तो आउटपुट का अनबाउंडेड होना हमने देखा कि वो दो रीजन से हो सकता है. या तो सिस्टम अनस्टेबल है, या अगर इनपुट ही आपका अनबाउंडेड है. तो इस केस में हम ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि ये जो स्टडी स्टेट में अनबाउंडेड आउटपुट आ रहा है ये इनपुट की वजह से आ रहा है या सिस्टम अनस्टेबल है. जबकि अगर हमने एक बाउंडेड इनपुट सिस्टम को अप्लाई किया, इफ यू हैव अप्लाइड अ बाउंडेड इनपुट टू सिस्टम एंड द सिस्टम इज अनस्टेबल, इफ यू हैव अप्लाइड अ बाउंडेड इनपुट टू द सिस्टम एंड वी फाइंड, जैसे मान लीजिए मैंने एक बाउंडेड इनपुट सिस्टम को अप्लाई किया और मैंने स्टेडी स्टेट में इसका रिस्पांस देखा. स्टेडी स्टेट में मैं इसका रिस्पांस देख रहा हूं कुछ ऐसे राइज हो रहा है. स्टेडी स्टेट में नहीं, आफ्टर सम टाइम आई फाइंड दैट इट्स रिस्पांस इज इंक्रीजिंग indefinitely. So in this case, you are sure that now that because you had applied a bounded input to the system, this unbounded rise in the output cannot be due to the input. It must be due to the fact that the system is unstable. Are you following me? Yes, sir.
So that means for a system to be stable, every bounded input must give a bounded output. You cannot state this for an unbounded input, because in that particular case, even if you get an unbounded output, that is expected. So this is just defined with respect to bounded inputs. So bounded input, bounded output stability criteria says that every bounded input must give a bounded output. If for any bounded input you get an unbounded output, the system is unstable. Now this information actually, because इनपुट आउटपुट डायनेमिक स्टडी सिस्टम्स की जो स्टडी की जाती है वो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल्स में स्टडी की जाती है. आपके पास एक सिस्टम है, इसकी जो इनपुट आउटपुट डायनेमिक्स है दैट वी स्टडी थ्रू ट्रांसफर फंक्शन मॉडल्स, isn't it? Transfer function models define the input output dynamics of system. So since this criteria refers to the relationship between inputs and outputs, so the stability or the poles की जो information basically है वो आपको information देती है basically regarding this bounded input bounded output stability criterion. So if you find that the system has got, आपका एक system है उसके आपने poles देखे कहाँ पे हैं, अगर वो left half of the S-plane में है, you should say that the system is BIBO stable. Are you getting me? जी सर. If the poles of the transfer function are located in the left half of the S-plane, if the poles of transfer function are located exclusively in the left half of the S-plane, the system is said to be BIBO stable. Is that clear? जी सर. Okay. Now let's move to eigenvalues, or the second stability criteria, that is asymptotic stability or impulse response stability criteria. इसकी हमें जरूरत इसमें पड़ी क्योंकि हमने कॉन्ट्रडिक्शन देखी, जो इन्फॉर्मेशन हमें आइगन वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे थे और जो इन्फॉर्मेशन हमें पोल्स प्रोवाइड कर रहे थे, हम उस कॉन्ट्रडिक्शन को थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. जब आप एक स्टेट स्पेस मॉडल बनाते हो सिस्टम का, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल्स में यू आर जस्ट कंसर्न्ड विद द इनपुट आउटपुट डायनामिक्स. स्टेट स्पेस मॉडल्स में यू हैव द इनपुट, देन यू हैव द स्टेट्स, and some what you call linear combination of the states give you output. So actually you have states in between. So you actually have a system wherein the states interact with the input and you get some linear combination of the states as the output. जैसे ऐसे होता है ना, let me draw it a bit in detail. Like you have got a system x dot equal to ax plus bu, y is equal to cx plus du. तो इसका अगर मैं सिमुलेशन डायग्राम बनाऊं तो it's like this. You have got an integrator here, n integrators actually. So you have got x dot, this is x, ये a हो गया आपका, so x dot is equal to ax plus it's equal to bu, so this is u and this is plus, this is also plus. So this will be first equation, x dot equal to, the x हो गया यहाँ से multiplied by a, so this becomes ax plus bu. Is that okay? Then you have y equal to cx plus du. So this is x dot equal to ax plus bu, y equal to cx plus gu. So this is x here multiplied by c.
and it's to be added to du. It's like this. It's d here, plus, and this is plus, and this is y. Isn't it? Is this diagram clear? जी सर। ये हमने सिमुलेशन डायग्राम जो बनाई थी ना लास्ट टाइम, जो हम बनाते आ रहे हैं, ये उसका हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में बना रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ये जो इंटीग्रेटर, ये एक इंटीग्रेटर नहीं है, ये n इंटीग्रेटर्स हैं, जितना इसका ऑर्डर होगा, बिकॉज यू नो दैट नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटीग्रेटर्स. सो यू हैव अ स्टेट स्पेस मॉडल लाइक दिस. अब देखो यहाँ पे इनपुट यहाँ पे, आउटपुट यहाँ पे है, तो इनपुट से आउटपुट तक की जो स्टोरी है उसमें स्टेट्स की डायनेमिक्स आ जाती है बीच में. सो एंड ये मैट्रिक्स बी एक्चुअली रिलेट करता है इनपुट को स्टेट्स के साथ, ये मैट्रिक्स सी रिलेट करता है आउटपुट को स्टेट्स के साथ, और डी आपको मैंने कहा है कि ये टर्म यूजुअली एब्सेंट होती है कंट्रोल सिस्टम्स में, बट एनीवे यू कैन रिप्रेजेंट इट्स नॉट एज अ फीड फॉरवर्ड टर्म, इट्स अ डायरेक्ट लिंक फ्रॉम द इनपुट टू द आउटपुट. इजंट इट? यस सर। ओके. नाउ इन केस अभी हमने देखा, जब हमने स्टेट स्पेस मॉडल लिया और उसका हमने ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन किया, दैट इज gs is equal to c si minus a inverse of b plus d, और हमने देखा कि अगर इसमें पोल जीरो कैंसिलेशन नहीं हो रही थी तो नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज एंड नंबर ऑफ पोल्स कैरी द सेम इंफॉर्मेशन. उसको दूसरे लफ्जों में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो इनपुट से लेके आउटपुट तक की स्टोरी है, स्टेट्स जो है, जो बीच में स्टेट्स आते हैं, जो x है, ये एक्चुअली लिंक करता है इनपुट को आउटपुट के साथ. So this actually means when there are no pole zero cancellations, you will later on see that this actually implies that all the input is affecting all the states and all the states are affecting the output. In case there are no pole zero cancellations, that actually means कि सभी states input output relationship में participate करते हैं. All the states have participated in the input output relationship. You'll get these things once we'll discuss other things like controllability and all that. Please try to understand things properly. Now let's say there are pole zero cancellations. तो pole zero cancellations का मतलब ये है कि जो आप input output relationship निकाल रहे हो सिस्टम की, उसमें कुछ states cancel out हो रहे हैं. That means कुछ states वो उस input output relationship में participate ही नहीं कर रहे हैं, which can be due to any one of these two reasons or three reasons. There may be some states which are not affected by the input, or there may be some states which are not affecting the output, or there may also be a case wherein there are some states which are neither affected by the input nor affecting the output. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. ये एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी आपको दी थी जब मैं ये स्टेबिलिटी, ये जो आइगन वैल्यूज का पोल जीरो कैंसिलेशन हमने एक बार डिस्कस किया था क्लास में. Let us say I have a student in the class, और उसकी इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप डिफाइन होती है ऐसे, लाइक इनपुट इज द इनपुट दैट ही गेट्स फ्रॉम द टीचर्स और फ्रॉम द बुक्स, एंड द आउटपुट इज हिज व्हाट यू कॉल CGPA एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर. आर यू गेटिंग मी? यस सर। ओके. नाउ दिस विल डिपेंड अपॉन, ये जो डायनेमिक्स है इसकी, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगी. स्टूडेंट हैज गॉट सम पर्सनल लाइफ आल्सो. नाउ दोज विल आल्सो डिफाइन हिज डायनेमिकल स्टेट्स. But as long as some states in the system may be which are not directly affected by the input. So if you try to define the input output relationship for the system wherein the input is defined as the input that the student gets in terms of the lectures from the teachers or from the books he reads, and the output is his CGPA at the end of the semester, if his activities are not affecting this input output relationship, that means there may be some states within the system which are not actually directly participating in the input. This actually depends upon the system itself. कुछ cases में ऐसा हो सकता है कि ये जो उसकी personal activities हैं student की, they may be actually affecting the input output dynamics, and in some other cases his personal activities may not be affecting the input output dynamics. Wherein they affect the input output dynamics, you will find that you will find that there whatever dynamics is conveyed by those states, you will find them in the transfer function also. लेकिन जिस केस में वो इनपुट आउटपुट डायनेमिक्स स्टेट्स पे उस पर्टिकुलर स्टेट को अफेक्ट नहीं कर पा रही है, so you will find the pole zero cancellations. Although the example that I have given you, it is actually
क्योंकि जो जब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो इसकी डायनामिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और हम एक ऐसे सिस्टम्स को स्टडी कर रहे हैं जिसकी डायनामिक्स हमने बहुत ही सिंप्लीफाई करके रखी हुई है। नॉन लीनियरिटी हमने कैंसिल आउट कर दी है, हम सिस्टम एज्यूम कर रहे हैं कि लीनियर है जबकि एक्चुअली सिस्टम्स नॉन लीनियर होते हैं। हमने एज्यूम कर लिया है कि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स हैं जबकि एक्चुअली सिस्टम्स टाइम वेरिंग होते हैं। लेकिन ब्रॉडली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका कि इसमें पोल जीरो कैंसिलेशन हुई, तो उसका मतलब फिजिकली ये हो सकता है कि कुछ स्टेट सिस्टम के ऐसे हैं जो कि इनपुट आउटपुट डायनामिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। इसी वजह से जब आपने इसका स्टेट स्पेस मॉडल को ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में कन्वर्ट किया, you found some cancellations. So that means those particular states which actually cancelled out, they are not participating in the input output dynamics of the system. Are you getting me? जहां तक इनपुट आउटपुट का सवाल है उस डायनेमिक्स में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेट्स हैं ही नहीं सिस्टम में। दो स्टेट्स डू एग्जिस्ट इन द सिस्टम। लाइक जो मैंने एग्जांपल ली थी स्टार्ट में, GS इज इक्वल टू S इंटू S प्लस 1 अपॉन S प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इस सिस्टम में दो आइगन वैल्यूज हैं at -1 and -1, but the poles are only there is one pole at -1. Are you getting me? जी सर। तो अगर आप इस सिस्टम का, if a system is the number of poles in the system is 1, what is the order of the system? It's the first order system. अगर किसी सिस्टम में नंबर ऑफ पोल्स 1 के बराबर है, -1 पे इसका पोल है ना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। अगर आप इसका रेस्पॉन्स प्लॉट करोगे, ये स्टेबल है, तो इसका रेस्पॉन्स कुछ ऐसा होगा स्टेप इनपुट पे। नाउ फॉर द सेम सिस्टम, if you consider its eigenvalues, the eigenvalues tell you that is the second order system because it has two eigenvalues. Are you getting me? जी सर। तो इसमें eigenvalues दो आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। तो इसमें आपको देखना है कि इसमें there is no contradiction actually. The contradiction is coming out because of the fact that we are using two different modeling paradigms for representing this system. So the contradiction you are observing is because of the fact that in case of transfer function models, you are only concentrating on the input-output dynamics, whereas the state space model gives you a detailed description of the system. So even if some state is there which is not affecting the input-output dynamics, that state will still be existing, and that वो वाला state जो है वो overall system की dynamics को affect करेगा, although input-output dynamics में वो participate नहीं हो रहा है। तो जब मेरे पास एक system है जिसके कि जो मैंने अभी ली थी एग्जांपल, जिसमें कि नंबर ऑफ पोल्स हैं लोकेटेड एट -1 एंड -2, और इसके आइगन वैल्यूज लोकेटेड हैं एट 1, -1 and -2. So that means this system is stable as far as the number of poles are concerned. That means input output dynamics is stable. That means अगर आप इस सिस्टम को बाउंडेड इनपुट अप्लाई करोगे, ये हमेशा बाउंडेड आउटपुट देगा, so it will be BIBO stable. लेकिन अगर आप आइगन वैल्यूज के हिसाब से देखो, there is some eigenvalue which is unstable. That means अगर आप इस सिस्टम को एक्साइट करोगे, इसको इनपुट अप्लाई करोगे, तो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट इसमें होगा जो कि अनस्टेबल होगा, लेकिन वो अनस्टेबल स्टेट इनपुट आउटपुट डायनामिक्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? This particular eigenvalue 1, it's not appearing in the set of poles. So unstable eigenvalue is not appearing in the set of poles. System is BIBO stable. But there is one eigenvalue which is unstable. That actually implies that there is some state within the system. जब आप सिस्टम को एक्साइट कर रहे हो, सिस्टम की डायनामिक्स को एक्साइट कर रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट अनस्टेबल हो रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर स्टेट क्योंकि पोल्स में अपेयर ही नहीं हो रहा है, so that actually is not affecting the input output dynamics. That actually means that the output is still remaining stable. Are you getting me? जी सर। तो ये वाला जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको कैप्चर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ अनदर नोशन ऑफ स्टेबिलिटी व्हिच इज नोन एज एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी और इंपल्स रिस्पांस स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। तो ये एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपने एक सिस्टम की डायनामिक्स को एक्साइट किया, तो सिस्टम की डायनामिक्स को एक्साइट करके जो इसके सभी डायनामिकल स्टेट्स हैं उनका, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू ऑब्टेन देयर टाइम रिस्पांस, दे विल हैव ट्रांजिएंट रिस्पांस कंपोनेंट एज द स्टेडी स्टेट रिस्पांस कंपोनेंट। तो अगर उन सभी स्टेट्स का ट्रांजिएंट रिस्पांस डाई डाउन हो जाता है एज टाइम अप्रोच इंफिनिटी, द सिस्टम इज सेड टू बी एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। एसिम्प्टोटिक नाम की आया इसमें, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, या इसको इंपल्स रिस्पांस स्टेबिलिटी क्राइटेरियन क्यों कहते हैं।
लेकिन फिलहाल आप ये समझने की कोशिश करो कि ये नोशन हम स्टेबिलिटी का कौन सा नोशन देने की कोशिश कर रहे हैं. So when you are exciting the dynamics of the system, if all the states individually are stable, then the system is said to be asymptotically stable, and that information is actually contained in the set of eigenvalues. Are you getting me? तो जैसे मान लो ये वाला सिस्टम है जिसमें कि एक पोल कैंसिल आउट हो गया, ये 1 वाला जो आइगन वैल्यू है ये सेट ऑफ पोल्स में पेयर ही नहीं हो रहा है, तो पोल्स के हिसाब से आपने बताया कि सिस्टम स्टेबल है, तो आपको एक टर्म ऐड करनी पड़ेगी कि ये बीबो स्टेबल है. और इस केस में क्योंकि आपको एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव मिला, इसका मतलब ये है कि जब आपने इस सिस्टम की डायनामिक्स को एक्साइट किया तो इसमें से 3 डायनामिकल स्टेट्स हैं, इसमें से उसमें से 2 डायनामिकल स्टेट्स जो हैं वो तो स्टेबल होंगे, लेकिन एक स्टेट इसका अनस्टेबल है. और वो वाला पर्टिकुलर स्टेट ऐसा है फॉर्चुनेटली इस केस में जो कि आउटपुट डायनामिक्स को अफेक्ट ही नहीं कर रहा है. सो इवन इफ दिस स्टेट इज अनस्टेबल, दैट इज नॉट अफेक्टिंग द आउटपुट डायनामिक्स. जो मैंने अभी एग्जांपल देने की कोशिश की थी आपको कि मैं इनपुट आउटपुट डायनामिक्स के साथ अगर कंसर्न्ड हूं, तो स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर स्टेट, इफ ही इज लेट्स से some particular student is interested in sports, he is giving maximum time in sports activities, and if his participation in the sports activities that is not affecting the input output dynamics in terms of the CGPA that is expected from him, that means the system is BIBO stable even if one of the states tends to be unstable. Is that clear? Is that clear to you? Yes sir. ये हम अभी और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. we'll try to give it a mathematical foundation also, and we'll try to justify why we call it asymptotic stability or impulse response stability criteria. Is that clear? I'll stop here. Any query if you have, you can ask me just in 2 minutes. या अगली बार आप देखो अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि अभी हमें ये और डिस्कस करना है. क्लियर टू ऑल? यस सर. अच्छा, तो ये लैब का क्या है, कल लैब हुई है आप लोगों की? जी सर हुई थी सर. कल क्या किया लैब में आपने? What did you do in the lab yesterday? PID controllers. कौन कौन सा कंट्रोलर किया? PI किया, PI combination और PID combination. Combination और ट्यूनिंग की कंट्रोलर्स की? Yes sir. How did you tune the controllers? Sir using Ziegler-Nicholas method, हमने पहले values निकाले और उसी से फिर हमने उनको ट्यून करा. फिर देखा रिस्पांस आपने देखा फिर ऑसिलोस्कोप पे? Yes sir. Did you get what was expected? Sir, in the P controller, we expected a sharp peak, and उसमें जो मतलब error आया steady state error, that was maximum. In Okay. PI combination error थोड़ा कम हुआ, and in PID the error was nearly equal to 0. 0. And what about transient response? Sir, transient response हमने MATLAB पर देखे, they were like जो हमने expect करा था वो उसी हिसाब से आ रहे थे. उसी हिसाब से आ रहा है. Okay, that's good. And recording मिल गई बाकी? अभी नहीं, आज तो नहीं. So for others, we'll be giving the recording today. Is that okay? And had the Yes, students submit the reports yesterday? Okay. Now regarding आपका जो मिड टर्म है, आपको पता होगा 4th से स्टार्ट हो रहा है ना? So 4th Yes, is sir. actually next Monday. तो अभी मैं आज आपकी अटेंडेंस कंपाइल करवा रहा हूँ. So your appearance in midterm will depend upon your attendance. So we'll be following the attendance strictly. जिसकी अटेंडेंस कम होगी उसको मिड टर्म में हम अपेयर नहीं होने देंगे. सिलेबस तो जो हम तब तक कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीक, लेट्स से अप टू वेडनेसडे, दैट विल बी द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन. इज दैट ओके? यस सर. ओके, थैंक यू फॉर टुडे. तो इसमें अगर कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन जस्ट इंडिविजुअली even talk to me, or we can discuss it in the next class. Thank you.